Bismillahirrahmanirrahim. This is AppSec's online sport program, class 5, week 5 assessment. Let's start our lesson with this hadith. इस हफ्ते की हमारी हदीस है, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज इस्लाम का बहुत अहम सतून है। किसी भी इमारत के लिए सतूनों के बगैर खड़े होना नामुमकिन बात है। तो जब तक हम नमाज कायम नहीं करेंगे, हम इस्लाम की इमारत पूरी नहीं कर सकते। मोमिन की मिराज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज, आप लोग वाक़ई मिराज तो सुना होगा। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। तो मोमिन अल्लाह ताला से मुलाकात कैसे कर सकता है? मोमिन अल्लाह ताला से मुलाकात नमाज के थ्रू कर सकता है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने से मुलाकात, अपने से बात करने के लिए एक ज़रिया दिया है, जो कि नमाज है। नमाज से हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। हमारी हर बात अल्लाह तक पहुंच सकती है, हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। तो हमारे लिए नमाज कायम करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी ही ज़रूरतें इस नमाज के थ्रू पूरी होती हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। लेट्स रिकैप। लास्ट लेसन वाज फैक्टर्स। इन लास्ट लेसन वी हैव लर्न दैट व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। दैट व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर इज़ अ नंबर दैट यू मल्टीप्लाई विद अनदर नंबर दैट आर टू नंबर्स. You can see in the image 2 and 4. These are the two numbers. When they are multiplied, 2 and 4, when they are multiplied, we get an answer that is 8. 8 is the product. But these two number are the smaller number. जो छोटे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बड़ा नंबर हमें एज एन आंसर मिलता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट. और वो जो दो छोटे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट दीज आर नोन एज द फैक्टर्स. 8 के फैक्टर हैं 2 and 4. Now you can see 2 multiplied by 4 is 8, 1 multiplied by 8 is 8, 1 and 8, these are the factors of 8. Or 2 multiplied by 8 is 16. 2 and 8 are factors of what? They are factors of 8. They are also factors of 16, because when they are multiplying, we are getting the answer 16. Now let's see what is HCF. HCF क्या है? HCF stands for highest common factors. अब factors क्या है? We have learned. Now we can see if we find the factor of 16, that is 1, 2, 4, 8 and 16. What are factors of 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Common, you can see the common factors. These are 1 common है दोनों में, 2 is also common, 4 is also common, 8 is also common. Now what is the greatest, what is the highest? सबसे बड़ा common कौन सा है? सबसे बड़ा common 8 है. So this is the highest common factor. After finding the factors, we will find what are the common. उन common में हमने देखना है कि सबसे बड़ा common कौन सा है, that is the highest common factor. Now we have learned also multiples. Multiples क्या है? In easy words, in easy language, we can say this is the simply table of that number. 2 के multiples क्या है? 2 का table 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. 3 में क्या है? 3, 6, 9, 12, 15. This is the table of these numbers. Now we have also learned about LCM. LCM क्या है? LCM is the least common multiple. Least, the smallest common multiple. You can see the table of 3 and 4. 3 and 4 में क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 4, 4, 8, 12, 16. You can see common क्या है? इनमें common 12 भी है और 24 भी है, लेकिन सबसे जो smallest है that is 12, क्योंकि हमने LCM least common find करना है, the lowest common factor. वो कौन सा है? that is 12. Let's move on. 4 operation. We are starting with chapter 2, that is 4 operations. You are learning 4 operations since class 1, that is the basic operations: plus, minus, multiply and divide. In this chapter we are going to learn about multiplying by tens, multiplying by 100 and multiplying by 1000. In previous class you have also learned that if we multiply a number with 10, what will be the answer? आपने पढ़ा हुआ है. And you can also tell me the answer that when we are multiplying with 8, we multiply 8 with 10, आंसर क्या आएगा? 8 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएगा? और 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएंगे? यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस class 4. You have learned what will be the answer. Let's see what will be the answer. Answer will be 80
800 and 8000. How? You have learned that you will simply add number of 0 at the end which are given. That is, if you, in first we have given 8 multiplied by 10. 10 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? एक ज़ीरो होता है, वो हम एक ज़ीरो हमने जो हमारे पास क्वेश्चन था दैट वाज 8, द होल नंबर वाज 8, उसके एंड पे लगा दी. इसी तरह 800. हाउ? 8 के एंड पे हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दी because we were multiplying with 100. Now if we are multiplying with 1000, we'll just multiply with, we'll write 3 zeros at the end of the number. Let's start our topic, that is multiplying by tens. When multiplying whole number by 10, simply add a 0 to the end of the number. As we have learnt in last class that हमने just 0 at the end of the number हमने add कर देना होता है. Let's study what is given in our book. It's multiplying by 10. 1 is a number that is given. 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर लेके आना है 1 हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में ज़ीरोज़ कितने होते हैं? एक ज़ीरो होता है, तो एक ही ज़ीरो हमने एंड पे लिख देना. 1 तो हमने स्टार्ट में लिख दिया एज इट इज़, उसके साथ हमने एंड पे एक ज़ीरो ऐड कर देना है. नाउ सी व्हाट्स द नंबर गिवन, इट्स 10. 10 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. विल राइट 10 एज इट इज़. जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 10, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से करना है. तो 10 में कितने ज़ीरोज़ है? एक ही ज़ीरो, तो हमने एंड पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया. इसी तरह 100 में जब करें तो 100 हमने एज इट इज़ लिख दिया. 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने एक ही ज़ीरो हम उसके एंड पे ऐड कर देंगे. नाउ यू कैन सी एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर बुक. दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 10. 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. क्या होगा? 2 विल राइट 2 एज इट इज़. 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया. 10 है, 10 में कितने ज़ीरोज़ है? 1. जस्ट ऐड 1 ज़ीरो एट द एंड ऑफ इट. नाउ 12 एंड 10. 12 एंड 10 को हमने करना है, तो 12 will write 12 as it is, and 10 का 1 0 will add it at the end of the 12. Answer will be 120. Again 132 multiplied by 10, we'll write 132 as it is, just add 0 at the end. Answer will be 1320. Again similarly 100, 200 and 1231 multiplied by 10, answer will be 12,310. You will solve these question number 3 on your loose sheets. You will just write the whole number as it is, add just 0 at the end of these whole numbers. Let's start the new topic, that is multiplying the number with 100. To multiply any number with 100, just tag 2 zeros on the end. पहले हम क्या करते थे? होल नंबर लिखते थे और 1 0 एंड पे लगा देते थे. अब हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो हमने एंड पे 2 zeros लगा देने. हाउ? अगेन अकॉर्डिंग टू अवर बुक, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 एज इट इज़. 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 ज़ीरो, तो वो 2 ज़ीरो हमने एंड पे लगा दी. इसी तरह 10 से जब किया तो भी 10 हमने एज इट इज़ लिखा, हमने 2 ज़ीरोज़ एट द एंड लगा दिए. इसी तरह 2 के साथ भी हमने यही किया और 200 हमने 2 ज़ीरोज़ एंड पे लगा दिए. मल्टीप्लाइंग बाय 1000. To multiply any number by 1000, just tag 3 zeros on the end. End पे हम 3 zeros लगा देंगे. नंबर as it is आएगा, उसको multiply with 1000 करेंगे, then we'll get the answer, that will be 5000. 5 will be as it is, we'll add just 3 zeros at the end of the number. According to our book, again 1 multiplied by 1000, 1 will be as it is, just 3 numbers will be added. Just एक वो नंबर एज इट इज़ रहेगा. हमने जस्ट क्या करना होगा? उसके 3 ज़ीरो हम साथ लगा देंगे. आपने पढ़ा हुआ है 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर. दैट इज़ दिस इज़ 1000 टाइम ग्रेटर देन 1 kilometer. That means we're adding 1 we'll write as it is, we're adding 3 zeros at the end. Again 100, we're multiplying 100 with 1000. 100 will be as it is, just we'll write 3 zeros at the end of the 100. Here 1000 kilometer as 1100 meters. How? Because we have to multiply it with 1000. Now our next topic is dividing by tens. When we are dividing by tens, we are chopping 1 0. That is, जब हम 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 1 0 उसमें से कट करें, ख़त्म करें 1 0. With 100 we'll cut 1 0, we'll cut 2 zeros. In 1000 we'll cut 3 zeros from the end. For example, 830 divided by 10, answer will be 83. We are dividing 0 from it, we are cutting 0 from it. Answer will be 83.
Okay, now according to a book, 10 divided by 10 is 1. कैसे? 10 is the number which is given in the question and we have to divide it with 10. दोबारा से हम 10 में कितने zeros है? 1. तो जो हमारे पास given number था that was 10. 10 में से हमने एक ज़ीरो कट कर दिया, answer will be 1. Now if we're having 100 divided by 10, again 10 में 1 0 है and we'll cut 1 0 from the number which is given number is 100 में से 1 0 at the end कट कर दिया, end में से 1 0 कट किया तो हमारे पास 10 बच गया. You can see similarly 1000 divided by 10, what will be it? From 1000 we'll cut one number from end, 1 0 from the end. 1 0 क्यों? क्योंकि 10 है, 10 में एक ही ज़ीरो होता है तो हमने उसका एक ज़ीरो 1000 के लास्ट एंड में से हम एक ज़ीरो काट देंगे, हमारे पास आंसर बच जाएगा 1000. Now you can see 210 divided by 1000 is 21. How? 210 हमारा क्वेश्चन है and we are dividing it with 10. You know we are having 1 0 in the 10, so we'll cut 1 0 from 210, that is the last end 0. Remaining number will be 21. Now you will solve this question on your loose chest. 30 divided by 10, 230 divided by 10 and 8600 divided by 10. How you will do it? You will cut just 1 0 from end of these whole numbers. Thank you.